नहीं, जिनका कैमरा ऑन हुआ मैं रिमूव कर रही हूँ। वैसे भी अटेंडेंस तो मिलेगा नहीं। पढ़ाई भी नहीं मिलेगी, अटेंडेंस भी नहीं। जो रूल है, रूल को आप चेंज नहीं कर सकते। कैमरा ऑन रखना है तो ऑन रखना है। नहीं पढ़ना है तो और बात है। ये कौन है? ऑलमोस्ट 49 अभय कुमार। जाओ भाई तुम भी, ज्यादा जरूरी काम कोई कर रहे हो तो जाओ। Nobody will be allowed in the class with their cameras off. कौन से लेसन हम लोग कर रहे थे आपके? मैम slumbered in my script. ये हो गया था क्या समरी? समरी हो गया था ना? चलिए, लुक स्ट्रेंजर। नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम लोग, लुक स्ट्रेंजर बाय W.H. Auden। बड़ी समरी somebody read.
Hello, ma'am. रोहित रीडिंग करो। रोहित रोहित क्या किया? क्या रीड करे? What you are speaking, bro? जो तुम सुने भाई। क्या बात है भाई, बड़ी मुस्कुरा रहे हो। वजह तुम हो। तक हम जा रहे हैं, अटेंडेंस बनवा देना। Where you are जाओ going? सौरभ जाओ, No, not at all. आज लिस्ट ले लो, बहुत दिन I किया can't. क्लास। अरे नींद आ रहा बहुत ज्यादा भाई। Oh my God, you can't say like that. गंदा वाला नींद आ रहा है। You are a red boy. What? You are a red boy of Sanjana ma'am. अच्छा
I think you got the point. कहीं someone did कोई पढ़ लिया और हम गायब सौरभ रीड कर देना। हम पढ़ लिए मन में भाई तुमने भी पढ़ लिया अरे सब कोई मन में पढ़ लिया। Okay. मैं काफी टाइम हमको कॉल कर मैम कहाँ चले गए आप क्लास में पढ़िए ना, आप लोग का रिवीजन क्लास है ना, डिस्कस कीजिए, पढ़िए। मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा है। WH ordained the Western Health ordained 21 February 1907 and 29 अभी तक आप September उसको पढ़ चुके, 1973 ठीक है। was an English American poet. Ordained poetry was the noted for its हेलो मैम, स्क्रीन हटा दीजिए। हटा दिए इसलिए कि आप लोग रिवीजन हो रहा है। जो लोग पहले क्लास कर चुके हैं वो तो डिस्कस कुछ नहीं कर रहा। रिवीजन क्लास में तो मेरी जरूरत ही नहीं है, आप लोग खुद कर लेते। हम्म हम्म फिर बहुत लोगों का कैमरा ऑफ है। तुम लोग सुधरोगे नहीं सही में। ये कौन लड़का ऑफिस में है क्या? तुम काहे के लिए कैमरा ऑफ किए हो? तुम तो ऑफिस में हो, पाटलिपुत्र ब्रांच में हो तुम घर क्यों नहीं गए? मैम ऐसे ही कुछ काम कर रहे थे इसलिए नहीं कहते यार। तो कैमरा बंद कर दीजिए। कैमरा बंद करेगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे, साफ बात है कि बिना चेहरा शक्ल देखे हम नहीं पढ़ाते। किन्हीं लोगों को शर्म नहीं आ रहा है बोलने पर, मैं नहीं कर। चलिए तो घर बैठिए, जो करना है करिए, क्लास मत करिए। ऐसे भी नहीं है, आपको नहीं दे रही है हम अटेंडेंस। इससे अच्छा आप पढ़िएगा भी, निकलिए क्लास। जगह छे कर रहते हैं झूठ मूठ, मेरा टाइम वेस्ट होता है, बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। हम बिल्कुल नहीं अलाउ करेंगे, जहाँ पर लाख सिर पटक लीजिए, हम नहीं अलाउ करेंगे। चलिए चलिए पढ़िए, बताइए हमको। दिस इज अ रिवीजन, टेल मी। पढ़िए। पढ़िए। पढ़ क्यों नहीं कोई रहे हैं? रेडी करो। नहीं तो हम स्टेटस दे देते हैं कि क्लास खत्म हो चुका है, सिलेबस, क्लास बंद कर देंगे। बोलने पढ़ने तो पढ़ भी नहीं रहे हैं आप लोग। नहीं पढ़ेगा तो क्लास हम बंद कर देंगे। पढ़िए। Western Hugh ordained 21 February 1907 to 29 September 1973 was an English American poet. Oren's poetry was noted for its stylish and technical achievement, its engagement with politics, moral, love, and religion, and its variety in tone, form, and content. He is the best known for the love poems such as
funeral blues, poems on political and themes such as September 1, 1939, and the Shield of Archils, poems on cultural and psychological themes such as the age of anxiety, and the poem on religion themselves, such as for the time being. He was born in York, grew up in and near Birmingham in a professional middle class family. He attended English independent or public school and studied English at Christchurch, Oxford. After a few months in Berlin in 1928-29, he spent 5 years, 1932-35, teaching in British public school, then traveled to Iceland and China in order to write books about his journey. That's all. आइए ना अभी पढ़िए। Look, stranger, on this island now, the leaping light for our delight discover. Stand stable here and silent be. That thought in the channels of the ear may wander like a river. The swaying sound of the sea here at a small field ending pause. With a chalk fall to the foam and its tall ledges. Oppose the plug and knock of the tide, and a single scramble after the sucking surf, and a gull lodges a moment on its sheer side. Far of the floating seats, the ships, the diverge on urgent voluntary raids, and this full view intended may enter and move in memory as now these clouds do, that pass the harbor mirror and all the summer thought the water saunter. हम्म, पढ़िए। In the first stanza, the poet is speaking to the stranger who has seen England but is prejudged about the weather. The common belief is that the weather has always been dull and cloudy with drizzles of rain every now and then. Standing at the Dover shores, he asks the stranger to look at the reflection of the sun in the river. The song of the waves can be heard too if the stranger listen quietly. ठीक है, इतना ही है फर्स्ट आंसर। ठीक है, सिंपल इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, अब इसका मतलब आप समझाइए। It is written in very simple English. Now you explain. In first stanza, poet is speaking about the stranger who has been in England, and he's talking about the weather. The common belief is that weather is always dull. He is talking about the weather that is always dull and cloudy, and rain every time it's rain in there. Yeah, and a stranger who is standing at the shore, he asks the stranger to look at the reflection. He's talking about just look at the wave of the reflection, then you will. किस चीज का रिफ्लेक्शन? The sun that reflect on the river. He's talking about that. ठीक है, मतलब जो सूरज की जो रिफ्लेक्शन, सूरज का रिफ्लेक्शन है जो कि पानी पे, वो बता रहा है कि देखने के लिए यहाँ का वेदर उतना डल भी नहीं रहता है। यहाँ ठीक है, बारिश होती है और क्लाउडी वेदर रहता है, लेकिन यहाँ पर धूप भी निकलती है। तो पूरी पोएट्री में पोएट ये चाह रहा है कि स्ट्रेंजर को, जो लंदन में जो नहीं रहते हैं, उन लोग का ये बिलीव है कि लंदन का वेदर बहुत खराब रहता है।
तो ऑर्डन ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं उनकी जो सोच है उसको मैं चेंज करूं कि नहीं देखो यहाँ पर भी मौसम अच्छा रहता है, वेदर अच्छा रहता है, धूप निकलती है और ये नदी के किनारे वो खड़े हैं और बता रहे हैं कि यहाँ का सीनरी देखो। तो पहले स्टैंजा में उन्होंने ये कहा कि रिफ्लेक्शन ऑफ द सन जो कि पानी में है, नदी में है, उसको देखने की और द सॉन्ग ऑफ द वेव्स, और जो जो लहरें, जो नदी के जो वेव्स हैं, वो अगर शांत रहोगे तो तुम उनकी भी आवाज, तो उनका भी गीत सुन सकते हो। अगर तुम शांति से, शांत मन से सुनोगे तो तुमको सुनाई पड़ेगा। In the second stanza, कौन पढ़ रहा है? मैम, दीपक कुमार, ठीक है। तो इस पोएट्री का थीम क्या है कि बदलाव लाना चाह रहे हैं। yes मैम, वहां लंदन, हम भी लंदन गए हैं, मैंने पहली बार बताया था जब क्लास में ले रही थी, और इसका पीपीटी पे मैंने दिखाया था। तो आप जान रहे हैं कि कहानी किस बारे में है। कहानी क्या, पोएट्री भी कहानी होती है। तो कहानी ये है कि लोग समझते हैं कि वेदर खराब है और ये ऑर्डन उन लोगों की सोच को बदलना चाह रहे हैं कि नहीं, यहाँ का वेदर खराब नहीं होता है, यहाँ भी धूप निकलती है और नदी के किनारे बहुत माहौल बहुत अच्छा है और सीन बहुत अच्छा है कि धूप खिली हुई है और उसका नज़ारा आप ले सकते हैं नदी के किनारे, और शांत रहिएगा तो लहरों का गाना भी सुन सकते हैं। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी पोइट्री है। तो आप समझ जाएंगे तो आप लिख पाएंगे। चलिए चलिए, सेकंड स्टैंजा में क्या हो रहा है? पढ़िए सेकंड में। ma'am, in the second stanza, he tells the stranger to shift his gaze on the green field and the mountains at the foot of the shore, where the waves dash to the walls of the mountains and carry pebbles into the river, sweeping sand singles as well. A sea What gull is the shifts. meaning of shingle? Ma'am, उन सैंड के साथ साथ जो छोटे 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 जो पत्थर होते हैं, पेबल्स, ठीक है। पेडल्स। तो बिल्कुल सिंपल सा ये यहाँ भी बहुत ही सीन, सिंपल सा सीन है। तो आप पोएट बोल रहे हैं कि तुम स्ट्रेंजर को है नहीं, वहां वो अकेले बैठे हुए, लेकिन वो एक तरह से हर एक इंसान जो वहां के लिए नए हैं, जो वहां देख के लौटे हैं, उनके बारे में बात करें। और ये वहां पर कोई बैठा हुआ नहीं है, लेकिन ये सामूहिक रूप से सबसे बता रहे हैं। ये पोएट्री लिख करके बता रहे हैं कि अब तुमने सन का देखा, नंबर वन, सन का रिफ्लेक्शन नदी में देखा तुमने, नंबर वन। नंबर टू, तुमने वेव्स का गाना सुना, और अब बोल रहे हैं कि अब थोड़ी नजर हटाइए, नदी के आस पास में जो फील्ड है उसको देखिए कि कितना सुंदर है, ग्रीन फील्ड है, और सटे उसके एक माउंटेन भी है, चट्टान है, माउंटेन है, जहाँ लहरें टकरा करके लौट रही हैं, और जब लौटती हैं तो अपने साथ बालू और कंकड़ भी नदी में बहा के ले आती। बस यही डिस्क्रिप्शन, चट्टान से टकराती है और अपने साथ कण, बालू जो भी है वो अपने साथ नदी में साथ ले आती। और फिर बोलते हैं कि एक पक्षी है व्हाइट कलर का, वो एक सेकंड के लिए बैठता है वहां चट्टान पे, और सब ये सारा सीन, एंटायर सीन इज मैजेस्टिक। इट मीन्स द एंटायर, पूरी जो सीन तुम देख रहे हो वो सब एक एक सीन की तरह लग रहा है। और मैजेस्टिक मतलब होता है कि मैजिकल, बहुत अच्छा। हाँ, तो इस सीन में क्या क्या है yeah, आप बताइए। सीन में क्या क्या, किन किन बातों को डिस्क्राइब किया गया है? नंबर वन, सन,
नंबर 2 वेव्स, नंबर 3 ग्रीन फील्ड, नंबर 4 माउंटेन, और फिर एक पक्षी है जो कि वहां पर आके 1 सेकंड के लिए बैठती है। Yes, ma'am. तो वो बोलते हैं कि ध्यान से देखोगे तो वो 1 सेकंड के लिए बैठती है, फिर वो उड़ जाती है। और लहरों का टकराना चट्टानों से, और अपने साथ शिंगल्स और बालू और कण अपने साथ, स्वीपिंग मतलब कि अपने साथ ले आते हैं। जैसे झाड़ू करते हैं ना, Yes, ma'am. झाड़ू करते हैं बहुत सारी चीजों को गंदगी हटाते हैं, उसी तरह से ये नहरें जाती हैं और वहां से बालू और कण पत्थर जो भी है उसको स्वीप करके, जैसे झाड़ू मारता है कोई, स्वीप करके वो नदी में सब वापस ले आती है। यही है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलिए थर्ड में क्या हो रहा है? In the third stanza, he speaks of the ship far off from the shore, which appears as seeds moving toward the assigned destination. The poet tells the stranger to look at the reflection of the floating cloud in the water, Hmm. dancing about, and that it may remain in the memory for life. Auden expresses his hope that the full view of the lovely nature scene he has described will enter the mind and heart of the stranger and to enrich his life. तो थर्ड और आखिरी स्टैंजा में क्या कर रहे हैं? तो फील्ड को देख लिया, माउंटेन को देख लिया, उस पक्षी को देख लिया, उसके बाद वो बोलते हैं कि बहुत दूर देखो अगर, तो शिप्स जा रहे हैं, पानी में जहाज जा रहे हैं जो कि अपने फिक्स डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। जहां जिसको पहुंचाना है उसको पहुंचाएंगे, अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, जहां लोग उतरेंगे फिर नए लोग चढ़ेंगे, यात्री। और पोएट बता रहे हैं कि वो इतने दूर हैं, इतने शिप्स से दे आर सो फार अवे कि वो लोग बिल्कुल बीज की तरह नजर आ रहे हैं, इतने छोटे। जैसे यहाँ से तुम तारों को देखोगे तो तारे बहुत बड़े होते हैं ना, बट दूर से देखोगे तो दे आर लाइक डॉट। इसी तरह से मॉडर्न बोल रहे हैं कि वो शिप्स जो है कि इतनी दूर है, एक बिल्कुल पानी में जैसे सीड्स बीज तैरते हैं, उसी तरह से ये शिप भी जा रहे हैं अपने अपने मकाम पे। और फिर वो कहते हैं रिफ्लेक्शन, पानी में रिफ्लेक्शन किस चीज का है? क्लाउड्स का, फ्लोटिंग क्लाउड। जिस तरह से सन का रिफ्लेक्शन था पानी में, वैसे ही वो बोलते हैं क्लाउड्स का रिफ्लेक्शन भी नदी में है, और जो कि क्लाउड्स ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो भी चलते हैं, मूव कर रहे हैं, मूविंग इन द वाटर। और ऑर्डन बोल रहे हैं कि दे आर गोइंग टू वॉक, सॉन्टर का मतलब होता है वॉक, ठीक है, कि वो लोग पूरी समर ऐसे ही पानी में तैरते रहेंगे और डांसिंग अबाउट, एंड दैट मे रिमेन इन द मेमोरी ऑफ योर लाइफ। और फिर वो कहते हैं स्ट्रेंजर को, तो ये सब देखो और इसको अपने मेमोरी में कैद कर लो, कैप्चर दिस इन योर मेमोरी सो दैट you do not forget in your life that when you went to London, the weather of the London is also very good, very beautiful. Auden expresses his hope, और Auden फिर बोल रहे हैं, होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि पूरी व्यू जो तुम देख रहे हो of the lovely natural scene जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है, that he has described, will enter the mind, वो आपके माइंड में कैप्चर हो जाएगा, and in your heart also, and to enrich his life, ताकि आप भी खुश हो जाएंगे कि कभी हम लंदन गए थे तो वहां का मौसम भी अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है। बस यही बात है। चलिए, any question you can ask me, ask me right now, because if I will be asking you questions, if you keep quiet, then I will be angry. किसी को कहीं से भी कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। Ma'am, the poet is just sitting at the shore alone and he's talking with himself. हाँ, वो अपने से बात कर रहे हैं, एक काल्पनिक अजनबी से बात कर रहे हैं, उनकी कल्पना में।
ये कौन है? सत्यम, रोल नंबर 20. Why your camera is off? तुम बात नहीं मानोगे तुम? तुमको बात समझ में नहीं आ रही है? I'm asking you to keep your cameras on. Sorry. And if you cannot behave yourself, you better leave the class. And who is this? Roll number 99. So anybody would like to ask any question from stanza 1, stanza 2, stanza 3? You can ask me right now. Nothing to ask? Okay. No question. Then we are going to go ahead with the summary. Read. Standing at the doorway source, the poet asks an imaginary stranger to look at the beauty क्या of मतलब होता है imaginary stranger? You just imagine a He is stranger. imagining there is nobody over there. So what he's doing is only imagining that there is somebody there. He's talking to an imaginary stranger at the shore of the river Dover. And where is this river Dover? It's in London. London. At sunrise And what time of the morning it is? It is sunrise. sunrise. And listen to the swaying sound of the sea. He expects that the stranger should take a long pause to enjoy the beautiful scene of chalk hills on the coast. He should stand silent and motionless on the sea beach along the south coast of England to hear the sound of the singles rolled backward and forward by the sea waves against the slopes. He will see the cliffs sloping down to the sea. He should stop the standing into the sea. There the tall cliff stand things against the dashing Cliff का मतलब क्या होता है? पहाड़. हाँ. There the tall cliff standing firm against the dashing waves. The tidal pulls wash the pebbles down from the beach every time. They recede from there. The poet will see the gulls resting for a moment on some shelf on the steep cliffside. Far away in the bosom of the sea, the ships look as small as seeds floating on water. They are going to different countries. The weather is very calm and the water of the harbor lies like a mirror, and the cloud soaring overhead are reflected beautiful in the calm and clear water of the harbor. Like the sailing ships, the cloud also seems to sail away in the reflected sky, and the water in fact the scene will be reflected in the mirror or the memory in times to come. मतलब आने वाले दिनों में तुम्हें याद रहेगा, इस तरह से इसको अपने मेमोरी में बसा लो. Okay, the central theme. The central theme of the poet is natural beauty, which is seen in the entire description. The sun, river, waves, green field, snow mountain, sea, gull, cloud, river mirror, the cloud and the sun is extremely सीगल बर्ड का नेम है ना वो? क्या? सीगल. क्या? मैम माउंटेन्स उसका सीगल.
हाँ सीगल के बारे में क्या? मैम क्या है मतलब, वो बर्ड का नेम है या और कुछ है? बर्ड मैंने बताया ना, एक पक्षी जो है व्हाइट कलर की। ओ अगर पीपीटी आपने नहीं देखा है तो फिर आप पीपीटी आपको शेयर कर देंगे। तो मैम सही है सीगल लिखा हुआ? हाँ ओके। सीगल व्हाइट बर्ड है, समुद्री पक्षी जो होती है ना वो। यस मैम देख। तो क्या थीम है? नेचुरल ब्यूटी एंड इज टॉकिंग अबाउट द सन, रिवर, वेव्स, ग्रीन फील्ड्स, स्नो माउंटेन, सी गल्स, क्लाउड्स, रिवर mirroring the cloud and the sun is exquisitely described. Now let us look at the questions. What do you understand by leaping lights? Leaping lights क्या होता है? Leaping lights refers to the sun when it reflects from the surface of the sea. Sun, very good. Leaping light मतलब कि जैसे कि सूरज जो छलांग, लीपिंग मतलब होता है छलांग लगाना। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज जो है छलांग लगा करके नदी में आ गया है। What is the writer's request to the stranger? What does he want the writer to do? Come at the river and stay quietly to listen how the waves or the nature. About he's talking about the nature to see how it is beautiful. What can the writer listen if he is quiet? You can hear the sound of the Of the waves and Yeah, beautiful yes. Yeah. scenery. If he stands very quietly, then he can also listen to the waves of the sea. What does the author tell the stranger in the second stanza? in second stanza, the writer has tells the stranger that he is listen to the sound of the waves, and the waves are coming with the gazes. No, Yeah, in the second stanza, what is he telling? when he's telling about the waves who is coming with the gazes means foams, and he's taking the pebbles and sands with him and colliding with the mountains. What according to order makes the scene a sheer sight? What one? Question number 5. Oh, what according to the order makes the scenes sheer sights? What do you mean by sheer sights? शेयर साइड का मतलब होता है किस चीज के एडिशन होने से वो सीन और भी ब्यूटीफुल हो गया। With the help of a bird, seagull. यस, एक्सक्विजिट तो डिस्क्रिप्शन था ही, और बहुत अच्छा हो गया जबकि वहां पर एक सी गर्ल भी आके बैठ गया, तो दैट मेक्स द पिक्चर परफेक्ट। व्हाई आर शिप्स कंपेयर टू सीड्स? Because when seeds are looking very small, when it go far from the bank of the sea, it's looking like a seed, and that's why it's compared Because like a the seed. ships are so far away from where Auden is sitting, so इतना दूर है कि वो इतनी दूर से वो बिल्कुल सीड्स की तरह लग रहा है। What is the description of the clouds? It's talking about the reflection of the cloud that he is also moving, and it looks beautiful. कहाँ देख, अरे डिस्क्रिप्शन कहाँ है क्लाउड्स का? ये क्लाउड्स कहाँ देखेगा स्ट्रेंजर? Ma'am, on the river or the sea, birds, on the seas and the river surface. Yes. So now question number 8. What does the author want the stranger to remember? the majestic the scenery. All the sceneries that he has The taken. entire description put together. Yes, in the description that he has. So that you will remember and you will feel happy when you think about the weather of London. You will also feel good and you will also feel happy that yes, I visited a place where the weather is also very good, very good. So this was Look Stranger.
चलिए मैं आपको फिर पूछती हूँ क्वेश्चन। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी। सबको समझ में आ गया? अरे नहीं आया तो बोलिए नहीं आया। चलिए, anybody has anything to ask? Again I'm repeating. No, madam. What is this girl's name? Priya, have you understood? Yes, ma'am. यस मैम। What have you understood? That मैम एक पोएट है जो W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई है, लुक एट स्ट्रेंजर। एक स्ट्रेंजर के, इसमें कोई स्ट्रेंजर नहीं है बट वो दिखाते हैं, वो दर्शाते हैं एक स्ट्रेंजर के तौर पे कि स्ट्रेंजर क्यों जो सोचता है कि वहां का वेदर खराब होगा? ऐसी धारणा क्यों मन में बनी हुई सबके? जो भी लंदन जाके लौटता है तो मैम लंदन का ज्यादातर मौसम रेनी वाला ही रहता है, इस हाँ, इसलिए Clouds, कि जो भी weather. जाता है जाके होके आता वहां, तो सबकी धारणा एक समान होती है। वो ये होती है मैं कि उस लंदन का धारणा को वेदर चेंज करना, अच्छा नहीं होता है। वो उस धारणा को चेंज करना चाहता है। वो नहीं। और इसी फीलिंग को, इसी कंसेप्शन को द ऑथर वांट्स टू चेंज, और इसलिए कह रहे हैं कि एक अपने इमेजिनेशन से वो या बैठे भी होंगे जाकर के नदी के किनारे, और वहां जो सीन उन्होंने देखा वो उन्होंने पिक्चर को पेंट कर दिया। अगर कोई पेंटर यहाँ पर है तो उसको पूरी तस्वीर को वो बना सकता है ना? आप में से कितने लोग जो अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं? क्या नाम तुम्हारा? सत्यम। चलो तो तुमको अच्छा, बहुत सारे लोग, ओके 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 ओके। तो एक काम करो, तुम लोग सब लुक स्ट्रेंजर का पेंटिंग बना के हमको दिखाना। फर्स्ट सेकंड थर्ड हम प्राइज हम देखेंगे, ठीक है? पक्का मैम। पक्का pen, मैम, madam. ठीक है। क्या करना मैम, थीम क्या है? it can be watercolor, it can be oil color, it can be poster color. Make a painting, बनाइए उसको, बनाइए। किस चीज का मैम? क्या? किस चीज का? अभी किस चीज की पढ़ाई हो रही थी? हाँ हाँ समझ गया, स्ट्रेंजर। और उसका टाइटल आप दीजिएगा लुक स्ट्रेंजर। आप भी ऑर्डन बन के स्ट्रेंजर की तरह स्ट्रेंजर को बताएंगे कि देखो स्ट्रेंजर ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो आप एक पेंटिंग बनाइए और हमको दिखाइए। ये रहा आपका असाइनमेंट। कब तक देना है मैम? यस व्हाट? MS कब पेंट में तक? मैम। एक चार्ट पेपर ले लो, खरीद लो। चार्ट मैम वैसे MS पेंट पे नहीं बना सकते हैं। MS पेंट बनाओगे, बनाओ ठीक। मैम अच्छा कब तक मैम। दिए देना है इसको? Next तुम जब class. खत्म कर लोगे तो हमको दे देना। कल 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 तो मेरा क्लास नहीं है। परसों? ठीक है, चलिए।